and that is why you don't do drugs. Wow! आज काफी फिट लग रहा है यार. Hey guys, what is up? हम Paracha over here और ये है LUMS Diaries का second episode. But before I begin today, there were some important things that I forgot to mention in the previous video. तो मैं उनसे शुरू करना चाहूँ. पहली चीज है मैट्रिक और FSC की grade requirements नहीं बताई एडमिशन के लिए. वो मैं बताना चाहता हूँ that there's somewhere around 75 and 80% and above for general admission. Specifics का मुझे खुद भी इतना नहीं पता. दूसरी चीज थी scholarship. A lot of people want to know what they need to do in order to get scholarship in LUMS. Well, LUMS में financial aid मिलती है, scholarship नहीं. और financial aid का ये सीन होता है that you can only get it if you actually need it. और उसके लिए वो आपसे काफी proof और documentation मांगते हैं जो आपको admission portal पे आराम से मिल जाएगा. अब आते हैं हमारे controversial topic पे, LUMS and drugs. To start off, मेरा एक question है. आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, इसमें एक बंदा था जो अमेरिका की फुल ऑन मार रहा है पूरी वीडियो में. अगर नहीं देखी तो इट्स ओके, मगर एंड में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है. दैट्स गोना बी द क्रक्स ऑफ टुडेज वीडियो. First step in solving any problem is recognizing there is one. That's exactly what we are going to do today. क्योंकि यार जब आप लम्स की अथॉरिटीज या लम्स के स्टूडेंट से ये सवाल पूछोगे, यार लम्स में ड्रग्स का प्रॉब्लम इतना बुरा है, तो the vast majority of them will say कि नहीं यार इतना बुरा नहीं है, मतलब लोग बढ़ा चढ़ा के बात हो. Today I'm gonna disagree with that. क्योंकि लम्स में ड्रग अब्यूज का एक सीरियस प्रॉब्लम है. इट्स प्रोबेबली द वर्स्ट इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इफ वी डोंट एक्सेप्ट इट हाउ आर वी गोना सॉल्व इट. नाउ गिवन दैट देयर इज एन इशू, आप लोग ये सोचें कि लम्स में ये इशू क्यों है. कोई तो वजह होगी ना. हो सकता है इसमें इंस्टीट्यूशन की गलती ना हो, मतलब हजार बातें हो सकती हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना फोकस ऑन टुडे. बट बिफोर वी लीव, टेक अ लुक एट दिस ऑसम सीनरी. Okay, so right now I'm in LUMS. मेरे दोस्तों को अगर काउंट करें तो हर 3 में से एक बंदे ने कम से कम LUMS में ड्रग्स ट्राई तो किए हुए होते हैं. But that's just an estimate. Let's go to someone who is also a student in LUMS and let's ask them about what they think. So guys, this is Ras Nabil. He's my friend. He's a junior. He's a law major. So Ras, if you were to rate out of 1 and 10, how bad is the problem of drugs in LUMS? Yeah, I would say it's at a 7 right now. I think 2 years ago it would have been at a 9. That was the trend पहले कि कोई भी restrictions नहीं होती थी. And it was only after a few unfortunate ODs that इन लोगों ने इस चीज़ को seriously लेना शुरू किया. Now it's better. It's still not solved. As if you were to pinpoint one reason as to why the problem exists in the first place, what do you think that reason would be? Yeah, I would say it's definitely peer pressure. And it's like very dangerous for those who are hostilites and they're coming to LUMS in their freshman year. Okay, that's the point when you realize I can make my own decisions, I can do whatever I want. And that is when the peer pressure can get to you. The word peer pressure has so much weightage in LUMS क्योंकि यार यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग हैं और इंटीरियर पंजाब से भी लोग हैं. And when they mingle with modern urban people from Karachi, Islamabad and Lahore, तो एक mismatch आ जाता है. और जब आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें हो रही होती हैं और आप घर भी नहीं जा रहे हो to remind you of your value, lines blur होना शुरू हो जाती हैं. And at that point बहुत मुश्किल होता है अपने आप को withstand करना. Exactly. And it always starts small. How many friends would you say you have in LUMS? Minimum 50 though. So let's keep that number in mind. He has roughly 50 friends. How many of them don't smoke? Wow. Okay. In freshman year it would have been like half of them. Now it's like 10 of them. 10 out of 50 people are the only ones that don't even smoke. तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें इससे कि how bad the problem might be. So that was Ras, but now let's go on to another person. उसके भी हम जरा opinions tally करते हैं. Let's see what other people have to say. Okay, so guys, this is Raja Mohsin. The good thing about him is कि इसको technically LUMS में सिर्फ एक ही semester हुआ है, तो इससे आपको एक बहुत fresh opinion मिल जाएगा as to what the drug problem is. How bad do you think the drugs problem is in LUMS? जितनी सर्कुलेशन चर्च की लम्स में होती है ना, इतनी पूरे लाहौर में नहीं होती है. Yeah, so see now, and he's telling like a really fresh opinion. मतलब इसको अभी proper I think 4 महीने ही हुए हैं of LUMS time. अब ये नए semester शुरू हुआ है. But even 4 months, मतलब it's not hard to understand कि यार यहाँ पे अच्छा खासा issue है. Second question, which is actually more important, why is the problem there? Freedom is the main problem. मतलब कि जब आपको आज़ादी मिलती है तो then you just want to try new things and eventually that freedom, the usage become an abuse. He said a very important thing here. पाकिस्तानी culture में आपको 18 तक कोई आज़ादी नहीं मिलती.
मगर 18 पे when you come to LUMS and you get 100% freedom with complete exposure, तो it's a little overwhelming. बाहर की कंट्रीज में भी ड्रग अब्यूज है, but usually you see that they find a balance. और वो लोग मतलब अपनी जिंदगी को अफेक्ट नहीं होने देते उससे, but we do. और उसकी यही वजह, एक्सट्रीम इंडिपेंडेंट एकदम से। यार पता है कि तुम्हारी एक वीडियो में देख रहा था उसमें यू टॉक अबाउट एस्केपिज्म। तुम बोलते हो कि यूनिवर्सिटी में ये हो रहे हैं, ये सब हो रहा है तो ये एस्केप है। तो हमें पता नहीं हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए। हम जैसे जो होते हैं ना कि मतलब क्या है ज़िंदगी, ठीक है, और फिर उसके बाद एकदम से जब एक चीज़ मिलती है तो वो हमारा सेंटर बन जाता है और फिर हम अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को। The video he's referring to is how to never get bored in a dorm room. I'll link it below as well. मगर the crux of that video भी यही था। When you give someone freedom, so there are two ways they can react. They can either use that freedom to escape or they can either use that freedom to find themselves. यहाँ पे जो मैंने majority लोगों को करते हुए देखा है is escape, और वो भी यही बात कर रहे हैं। And when you look for an escape, तो you go to these things. Try new things. You try new. Not to say that trying new things is bad, but you try everything. Trying everything is never good. जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। ओके ना मोहसिन, फॉर पीपल हु सी लम्स फ्रॉम वेरी फार स्कोप, उनको तुम क्या एडवाइस हो? आई वुड सजेस्ट कि जब आपने लम्स आना है ना, हैव योर हेड क्लियर कि ज़िंदगी से क्या क्या चाहिए। एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं अभी स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ रहा था और सीन ये था कि बिफोर स्टार्टिंग एप्पल ही यूज्ड टू डू LSD, और फिर जब उसने एप्पल स्टार्ट की हिज लाइफ काइंड ऑफ बिकेम फोकस्ड ओवर देयर। उसके बाद उसने LSD नहीं की, ही बिकेम सो फोकस्ड कि उसे भूल गया कि LSD भी करने, और उसने अपने कॉलेज में अब्यूज़ की थी LSD। और यही मेरी एडवाइस है कि इफ़ यू वांट टू कम टू लम्स एंड यू गेट इनटू लम्स, जस्ट हैव अ क्लियर एम्बिशन कि ज़िंदगी से क्या चाहिए तुम्हें। That is the essential goal of surviving any university. अगर आपके morals, अगर आपके goals clear हैं, तो no matter how distracting it is, these things won't get you. Now I bet you're thinking कि जो भी हो, अगर पेरेंट्स को पता चल गया कि ड्रग्स का इतना इशू है लम्स में, तो उन्होंने तो कभी भी नहीं भेजना। इस बात का भी जवाब है मेरे पास, मगर उसके लिए आपको मेरी अगली बात थोड़ी गौर से सुननी पड़ेगी। ये है एक बबल। ये बबल पेरेंट्स अपने बच्चों के सराउंडिंग में बनाते हैं। सारी अच्छी चीजें इस बबल के अंदर डलती हैं और सारी बुरी चीजें इसके बाहर। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, एज लॉन्ग एज दे कीप यू इनसाइड दिस बबल, यू आर सेफ। और शायद इसीलिए वो आपको लम्स नहीं भेजेंगे। लेकिन जरा सोचिए, आप इस बबल में बच्चों को कब तक रखेंगे? Sooner or later they have to face the real world. चाहे वो 18 साल की उम्र में हो या 28, बबल तो फटेगा। लेकिन 28 पे होने का ये नुकसान है that making a mistake at 28 is so much worse than making a mistake at 18. क्योंकि 18 साल की उम्र में आपके पास गलतियों को सुधारने का वक्त होता है। Now look, the choice between good and evil is the inherent right of every human being. ये चीज तो हमें खुदा ने दी है, तो पेरेंट्स कैसे ले सकते? बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बच्चों को जो करना है वो आप उनको करने दें। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप बबल ना बनाएं। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये बबल जो आप उनके बाहर बनाते हैं, वो आप उनके अंदर बनाएं। In their hearts, teach them morality, not abstinence. उनको सही और गलत का फर्क इतनी अच्छी तरीके से समझा दें कि वो कहीं भी चले जाएं, अपनी वैल्यूज ना भूलें। क्योंकि दुनिया में जहां भी अच्छाई होती है, वहां उसको कॉम्बैट करने के लिए बुराई भी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चों को बुराई से दूर करने के चक्कर में उनको अच्छाई से भी दूर कर दें। एक तरफ अगर बुरे ड्रग्स हैं, तो दूसरी तरफ अच्छी पढ़ाई भी तो है। You can't forget that. That's about it for today. Until next time, this is Paracha with LUMS and DRUGS.